Good morning, friends. Happy Saturday, and I hope you all are doing good and enjoying with your families. Today, we're gonna make a video on crude oils. What will be the crude oil levels video in the coming Monday? आने वाले टाइम में मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे वी गोना डिस्कस अबाउट व्हाट शुड बी द क्रूड ऑयल इंट्राडे लेवल्स फॉर द मंडे व्हाट विल बी द क्लोजिंग ऑफ द क्रूड ऑयल ऑन मंडे right, and what will be the perspective of the crude oil in the short term perspective, right? We are going to discuss over the technical chart as well. We're going to discuss the risk management, the hedging as well. So if you really want to enjoy this video, if you really want to take each and every bite of this video, knowledge and skills, because in other videos if you go, you just will get a levels. They will give you the trading levels based on the candlestick patterns, but here you will get lots of knowledge and skills as well. So utilize your Sunday, I would say, like, and see the video from the beginning to the end. And if you are the new on the channel, please subscribe the channel and click on the bell icon and select all. So what will happen if you select all is whenever I upload any video, you'll get the notifications and you can see on the time, right? Let's start the video what exactly it is. Okay, so we're gonna discuss about the crude oil. First of all, crude oil breaking news. Please see this video from beginning to the end. Okay, let's start this video. This is the okay, so there are lots of news as usual. Every Saturday and Sunday lots of news comes related to crude oil, natural gas. So today we're going to discuss about crude oil related breaking news. You can see here, this news is flashing here. Euphoria for oil companies as earning exceed expectations. What this news says and how is it the impacting the crude oil prices, right? So we're going to discuss about here in what is turning out to be a very impressive earnings session. Nearly all the majors are beating expectations and rewarding shareholders with higher dividend and share buybacks. Those who don't know English, don't worry about it, guys. I'll explain in Hindi as well. Okay, first of all, because there are lots of requests from the subscriber that we don't know Hindi, we need to understand what exactly you are telling, right? Okay, so that's what I'm speaking in English. But when I give the levels, I'll speak in Hindi. Don't Hindi and English as well. Don't worry about it. In what is turning out to be a very impressive earnings sessions, nearly all the measures are beating expectation and rewarding shareholder with high dividend in the share buyback, much to the charge of the White House. What they are telling is like the oil companies are getting lots of profit, even they are distributing their bonus and dividends to their employees. This is what they are saying, right? Okay, in the sign of bull market, meanwhile, a major geopolitical risk in Middle East sign up today. If you aren't, that's what I was keep telling you guys. I was keep telling in each and every my videos. See, you can see the inventories as well, contract prices. Okay, so I was telling in each and every video that there's no reduction in the supplies. There's no reduction in the supply. There's no increase in the demand. The demand is same. The supply is the same. The only difference is the prices. The only difference is the price is high. you know and price is high because all the companies are charging high price, for the crude oils, right? So this is what exactly happening in the crude oil. So I'm going to discuss like what will be the implication of this news on crude oil and how it can affect the crude oil prices on Monday. So first we're going to see the second news here. Okay, what is this news? A new case of $100 crudes. What exactly is? From the middle of the June until the end of the last month, the crude was in a sustained downward trend, and that move wasn't a straight line. Of course, the maintain at least half a dozen reached the CL. From a chart perspective, this looks more like a reversal than just they are just giving their opinion. Here you will see lots of blocks, financial blocks, and they are giving like it can go further down. We don't need to focus on these blocks because here only we see the information that despite of this is happening. The crude oil should go down, but it's going up. So we don't need to focus on their blocks and all. This is only the knowledge we have to take out from the blocks, right? This is what our main motto, right? तो बात कर लेते हैं दिस न्यूज़ के बारे में. दिस हाउटी ट्रेड टू ऑयल मार्केट इज बैक. ओके, व्हाट इज दिस? ओके, लेट्स जस्ट understand and brief. The oil market certainly remember September when Yemen, Iran spiked. Houthis launched a drone attack on Armago in the eastern area, cutting Saudi production. Okay, yeah, you can. I know that news. Probably you guys don't know because I am very much interested in geopolitics. So I know that news that happens. I think. Recently also not in 2019, even 2021 also it has bans. There were lots of attack in the Saudi Arabia. So the attack destabilization global financial, even now we see the spec of hot retreat to Saudi will re-emerge and the failure to. Dekhe dosto, this is the very breaking news, guys. I was telling you that, okay, I was telling, I think in my last of videos, that what exactly America can do. Can America will sanction on the Saudi Arabia or what? Like, this is what my thumbnail also is showing, the same thing, I think. Okay, Saudi Arabia, and I think America
literally now taking the action, planning to take the action on Saudi by cutting his defensive, the defense, their army is in the Saudi Arabia to protect Saudi Arabia, right? They are moving back to their army, that is the best, because what happens when uh, US army will pull back from Saudi na. The Saudi, there were lots of attack on Saudi, because there are around the Saudi, there are lots of peoples are there who are ready to, who are ready to do war with Saudi, because this is what happened last time also, and this is what they are saying, like Houthi. Okay, not just Houthi, there are lots of groups are there who are ready to attack on Saudi Arabia. They are just stopped because of US military, right? And now Saudi can't take Russia military also. Russian military is already suffering, right? They are already suffering in the Ukraine. How they can provide the protection to the Saudi Arabia, right? So this is what happening now. You will see. Then there will be they will be forced not to do production cuts. So all these news, I'll see the one more news, then we will see what will be the impact of all these three news one by one. So another news is record US crude oil export push oil price higher. देखिए, US is still maintaining its crude oil and natural gas reserves. They are very smart, right? Okay, record US crude oil exports push oil price higher. You know that somebody about Shell petrol pump. Okay, when you go for Shell petrol pump and just fill the your petrols in the your bike, okay, and then you go to the Indian oil petrol pump, you will see the differences, the price differences. There's huge price differences. At least you will see like 7 to 8 rupees higher than Shell petrol pump. And this is what exactly the Americans want. What exactly they are doing is they are sanctioning on the Russia. Russia is a very cheap oil exporter, right? Even right now, lesser than Saudi as well. Saudi is also very cheap exporters, right? Okay, now Europe was Saudi already told that we will not export. Okay, now US is the only option. Now US is exporting his crude oil in a very very high prices, to control his economy to Europe, and unfortunately Europe don't have any other options. Europe is taking all these crude oils at very high prices. And December, this is what happening, right? I'll explain this one. December WTI crude oil future finished higher on Thursday, putting the market long-term traders that are starts for OPEC plus production cut, and the European Unions were also underwhelming prices. Although US crude oil exports surged to a record, US crude oil export rose in the most recent, even as the volume of the export hit an all-time record. Energy Information Administration reported on Wednesday, crude inventories rose by 2.6 million barrels. Those who don't know what exactly the crude inventories, I'll make in a different video. Crude inventories kind of option chain series. Okay, 2.6 million barrel in this week, October 21 to 439.9 billion barrels. So this is a huge growth, right? The big surprise that draw price higher, however. So that's so what they are trying to say is they all are getting the profits. American companies are getting the profits all over the world. The crude oil companies are getting very very good profits. Now you will come in the question, then why America want to reduce the price if they are getting the profit? Okay, so there is a reason behind that. If I'm going to explain these reasons, this video will become very big, and the comment section will be also very lethargic. People will start commenting. So I'll stop here and I'll go to the crude oil chart. Finally, I think most of the peoples are waiting for this only. So all these news, what they are indicating is, I would say, like, they are indicating, according to me, according to my analysis, the crude oil prices will go further down. It will not going to increase according to my analysis. Okay, so let's discuss on the chart technicals, what exactly chart technicals are saying. There are lots of peoples, who know that how to read the candlesticks. I'm gonna tell you guys, I'm a candlestick expert. Okay, but after just before 2 years I started this analysis from the normal chart also. You will be very shocked, but I'm doing it from last 4 months, and you'll able to see like what is my performance. You can see, if you see my all videos, you can see my performance is below above 95%. Recently, within a 2 days in natural gas, by this technical chart only, we earned 10% profit. 10% profit. So when I'm talking about profit here, I want to give a disclaimer here. This channel is only for educational purpose. I don't recommend any buy and sell call. If you really want to do trade, please consult your certified financial advisors or do your own research before your trading. I'm not a certified SEBI advisor. I'm not certified any kind of financial advisor. I'm not responsible for any of your profit and losses. So please be aware. Please do your own research before doing any kind of trading. So let's start the levels. What will be the levels on the Monday? So right now it's trading 88.38. So we're gonna see the Monday chart here. तो दोस्तों वनडे का चार्ट देख लेते हैं. आई स्पीक इन हिंदी आल्सो whenever I can. Okay, so 88.38 पे, this is now 88.38. Now what we can do here? Okay, so let's talk about first intraday. What exactly the intraday levels will be on Monday,
right? This is 1 week chart. Okay. uh, so from here, if you're asking me, like, 1 week chart is saying like it can be upside. Okay, so let's discuss 1 month chart here. Okay. Okay. But the chart can be reversed anytime, because this is what happening in crude oil natural gas from last, I think, 6 months, right? So this is the beauty of crude oil. There are lots of volatility will be happening here, right? So this is the international market. My all the US subscribers, welcome you all. 88.38, it's trading 88.838. And okay. Okay. Mm-hmm. So let's go for 6 months. So all my subscriber, whenever I see intraday even as well, I see the 1 day to 1 year chart, because we want a perfection. We don't want any kind of deviation from our levels. So because we are putting our hard earned money, so that's what we have to utilize that. We have to do the all kind of analysis before doing any kind of investment, right? So if you ask me to, like, there's a two options here. Okay, I can see for the intraday levels, if it gonna open, if there will be gap up opening. Please listen carefully. If there's a gap up on Monday, and gap up sustain around 88.75, okay, consider the volatility 88.75, and that should be it should sustain above 88.70 for at least 2 minutes. It should sustain above 88.75 for at least 2 minutes. If it gonna happen, then probably I think you can see the 89.5 levels even Monday itself. Okay, now lots of people will say, like, you are right now you are telling that you are very bearish on crude oil. I'm bearish on the crude oil on the short term perspective, not in the intraday levels. Okay, intraday level can be anything, right? Intraday can be anything. So you have to work on the levels and resistance and SL basis. Okay, so above 88.75, you can see 89.5 levels on Monday. And downside, okay, downside if it go below 88. Listen carefully, guys. Downside, if it go below 88 and sustain below 88 for at least 2 minutes, probably you can see the levels of 87 as well. Really, 87 as well. You can see the same day on Monday, right? On short-term perspective, I can give you the levels. Okay, we'll come to the Indian market as well. For then I'll speak in Hindi, guys. Okay, for 88.38, if you go in short-term perspective, I can see the resistance around 1 minute, guys. Yes, 89.20 is the resistance, guys. Volatility, consider the volatility. I would say, like, yes, guys. Okay. So if it goes above 89.20 and sustain for at least 2 to 3 2 to 3 minutes, what is the strategy you were wondering, like, why he's saying about, like, it should sustain for at least 2 to 3 minutes? Why? What is the strategy and all these things? I'm gonna explain you guys in this strategy today. I'm gonna make a video on this one. Okay, there's another channel of my Ajay Ka Ulta Chashma. If you really want to understand all the strategies and techniques, you can go ahead and subscribe to this channel also. This is a motivational videos where I used to give all the tactics of the stock markets. If you utilize these tactics, you'll never be in the loss. When I say you will never be in the loss, on an average basis, on monthly basis, right? It's not possible that you are never be lost. Today you are creating profits all 30 days of month, you are creating profit. That is not possible, but on an average basis you will get the profit. And I'll try to reduce the risk by introducing all these kind of strategies here. Okay, so let's go to the chart. Okay, 88.38. So if it's sustained about 89.20, then I can see the levels of 93 easily. I can easily see 90 below. Downside, if I can see, if it goes around 87.20, below 87.20, then I can again see the levels of 85 easily, below 85, I guess. But volatility, consider the volatility, you will see the 85 levels as well, right? Again, 85 is the resistance. So these are my short term perspective. If you ask me, in my perspective, I'm still bearish on the crude oil, because I can see still there are lots of downside is waiting here. Maybe there can be little bit consolidation here, but there can be. So now comes to the Indian market. तो गाइस, इंडियन मार्केट में अब हम हिंदी में बात करेंगे आपको लेवल्स के बारे में, कि क्या लेवल्स रहेंगे इंडियन मार्केट के बारे में। तो देखिए, हम आ जाते हैं इंडियन मार्केट में। 7215 पे ट्रेड कर रहा है, राइट? सो व्हाट विल हैपन,
वैसे तो आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट और जो इंडियन मार्केट है सिमेट्री पे चलता है, लेकिन फिर भी इसमें कभी-कभी लिटिल बिट थोड़े अलग से फ्लक्चुएशन हो जाते हैं। वो अगले आने वाले दिनों में वो स्क्वायर ऑफ कर लेता है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको तो जब इंट्राडे करना है ना, तो हमें तो इंट्राडे के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो वन डे का चार्ट देख लीजिए दोस्तों। वन डे का चार्ट जो मुझे बता रहा है, वो मुझे अपसाइड तो नहीं बता रहा है, देखिए। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का चार्ट डेफ़िनेटली मुझे कंसोलिडेशन लग रहा है। यहाँ पे दोनों मूव हो सकते हैं, अप साइड भी हो सकता है और डाउन साइड भी हो सकता है। तो कल की हमारी जो मंडे की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, वो गैप अप और गैप डाउन वाली होगी, कि गैप अप होता है तो ये है, गैप डाउन होता है तो ये है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। कंसीडरिंग द चार्ट, चार्ट को देख के मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं हमेशा से हेजिंग पे रिलाय रहूँगा, हमेशा मैं अपनी कोई दूसरी स्ट्रैटेजीज भी आपकी अलग-अलग इंप्लीमेंट होनी चाहिए बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, राइट? तो सिचुएशन के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह बिल्ड करनी पड़ती है। मैं दोस्तों बहुत डीप में करता हूँ, मेरे लिए ये एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ़ आते हैं, उनके लिए यूँ ही वन डे बस लिया, ट्रेड लेवल लिया। मेरे लिए हाई क्लास प्रोफेशनल ट्रेडिंग है दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा इसको सिंसियरली लेता हूँ और हर एक-एक चीज़ को एनालिसिस करता हूँ। स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ, आपको तो पता ही है, इतने सारे वीडियोज़ देख लिए आपने, राइट? So I gonna make so many strategies here. So here gap down and gap up strategies will work according to me on Monday. So let's go for 1 month chart as well. Before I introduce any kind of intraday call, पहले intraday call देने के लिए मुझे 1 ईयर का चार्ट देखना पड़ेगा। 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट। सो देखिए यहाँ पे भी मुझे डाउनफॉल लग रहा है, ओके। सो ऑन एंड ऑल फ्रॉम हियर, ओके, सो 1 ईयर इज लुक्स गुड, ओके। So go to 1 week charts, okay guys. So there's a complete I think clear resistance is there. अगर आपको नॉर्मल चार्ट से समझ नहीं आता दोस्तों, मुझे कैंडलस्टिक में मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं कैंडलस्टिक अब यूज़ नहीं करता क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है, रिट्रेसमेंट करना, ये करना। मुझे जब नॉर्मल चार्ट से समझ आता है, तो अगर आपको नॉर्मल चार्ट से समझ नहीं आता है, तो आप फिबोनाची ओपन कर सकते हैं। फिबोनाची सीरीज़ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ दोस्तों। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या कह रही है दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं सिर्फ फिबोनाची सीरीज़ से ही लेवल्स नहीं निकालता हूँ दोस्तों। मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ आपको, मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 7215 पे है। अगर ये 7000, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, 7190 के नीचे जाता है मंडे को, 7190 के नीचे जाके सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट डाउन साइड बिलो 7190, तो मुझे लगता है कि ईज़िली आपको ईज़िली 7080 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7080 के लेवल आपको ईज़िली दिख सकते हैं वहाँ पे, 7190 के नीचे सस्टेन करता है तो, राइट? ऊपर की साइड में क्या रहेगा दोस्तों? देखिए, ऊपर की साइड में मुझे लग रहा है कि अगर ये जब तक 7240 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ठीक है ना? वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए 7240 के ऊपर सस्टेन नहीं करता फॉर एटलीस्ट 2 मिनट, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर सस्टेन करता है, ये इंट्राडे लेवल्स बता रहा हूँ, अगर सस्टेन करता है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आपको अ लेवल्स वापस से मिल सकते हैं 7320 के। तो 7240 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 7320 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अब मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो पूरा देखा करिए, हमेशा आधा-अधूरा वीडियो देख के आप आधा-अधूरा नॉलेज ना लीजिएगा। ओके, सो देखिए 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। देखिए 1 मंथ के चार्ट में डेफिनिटली यहाँ पे क्लियर इंडिकेशंस आ रहा है दोस्तों, कि एक लेवल तो ये बन रहा है, दूसरा लेवल देख लेते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों क्लियर लेवल बन रहा है। हुँ। 7350, अगर वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखें तो 7360 के ऊपर दोस्तों। 7360 के ऊपर कुछ बाय बन रहा है, अगर 7360 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है 7600 के लेवल्स आपको ईज़िली 7620 से 7650 के लेवल शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में दिख सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों नीचे डाउन साइड में अगर मैं देखूँ, तो डाउन साइड में दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशंस है दोस्तों, कि अगर ये 7000 के नीचे जाता है, ठीक है ना? 7000 के नीचे जाके सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको नॉट एक्ज़ैक्टली 7000, आई थिंक अगर ये 7050 के नीचे आता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 7050 के, 7000 तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, एक्चुअल रेजिस्टेंस है 7050 के अगर नीचे आता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको वापस से 6800 के लेवल्स ईज़िली दिख सकते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं अभी भी बेरिश हूँ दोस्तों, ठीक है ना? आपसे एक निवेदन है दोस्तों, जाने से पहले एक बात बोल देता हूँ दोस्तों, हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करा करिए दोस्तों। एक बार जो टाइम चला जाता है वापस से आता नहीं है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर मेरा लॉस हो गया, सर आप ही मेरे पार्टनर, आप जो बोलोगे मैं कर लूँगा। दोस्तों यहाँ जो बोलने और करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको जब आप स्टेप्स आपको लेने होते हैं तब आपको ध्यान रखना होता था। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ा-सा इसको सिंसियरिटी में लीजिए। अगर आपको इसको डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करोगे, तो आपको मार्केट भी डिसिप्लिन तरीके से लेगा दोस्तों। इन्वेस्ट करने से पहले
पहले हमेशा सोचिए कि आपकी एक फैमिली है, ठीक है ना? आप कितना कमाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि आपके पैसे जो ग्रो करेंगे या जो आपको लॉस होगा, उससे सिर्फ़ आपको इम्पैक्ट नहीं होगा, आपकी फैमिली को भी इम्पैक्ट होगा, फाइनेंशियली होगा। तो इस बिज़नेस को एज़ अ मुनाफ़े के लिए कमाएँ, मुनाफ़े के लिए करें, ना कि इसको इस बिज़नेस को कोई त्रासदी के रूप में लें, राइट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप मेरे साथ आते हैं, नॉलेज और स्किल्स लेते हैं, तो डेफ़िनिटली इट गोना हेल्प यू। काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प की है, वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, तो मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने हर वीडियो में मेरी एक स्पेशलिटी रही दोस्तों, मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। ऐसा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको, इतने सारे वीडियोज़ बनाए मैंने 250 वीडियोज़ बना चुका हूँ दोस्तों। एक भी वीडियो में अगर मैंने बिना नॉलेज और बिना स्किल के कोई बात की हो, बिना कोई मैंने सिंपल लेवल्स देके चला जाऊँ तो उस वीडियो का लिंक पोस्ट कर दीजिए, मैं मान जाऊँगा। क्योंकि मैंने हर नॉलेज में आपको वीडियो और दिया वो ठीक है ना? लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, लोग स्किल्स और नॉलेज पे पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, स्किल्स और नॉलेज में क्यों नहीं वो उनका अभी भी वही रहता है, ट्रेडिंग लेवल बता दो सर। अरे यार ट्रेडिंग लेवल बता दो यार, कब तक ये करोगे ज़िंदगी में, कब तक करोगे? हैं? अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ, मतलब यार बहुत अजीब-सी बात है लोग जब जॉब करते हैं लोग तब तो भाई साहब उनको इतना काम करना पड़ता है, 10-10 घंटे काम करते हैं लोग, जब जाके उनको सैलरी मिलती है, उसको इतना तरीके से लेते हैं। यहाँ पे आपको जब जॉब से ज़्यादा पैसा मिल सकता है, अगर आप उतनी उतनी मेहनत करो ना, उससे कम मेहनत में यहाँ से ज़्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोग करते नहीं हैं, ठीक है ना? क्योंकि क्या है इंडियन मार्केट, चाइना में लोग कितना कमाते हैं स्टॉक मार्केट से, राइट? इंडिया में लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है। सो दोस्तों मैं यहाँ वीडियो एंड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा दीजिएगा। अजय का उल्टा चश्मा भी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये दबाना और ऑल पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेंगे दोस्तों। सो दिस इज़ अजय एंड यू वाचिंग अजय व्लॉग चैनल एंड दिस इज़ अजय एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।